Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, dear students, as you know, this is class 6th. We were discussing the chapter number 11 of your science textbook, that is light, shadows, and reflection. So, yesterday we have started this new chapter of this science textbook, light, shadows, and reflection. In the first day, we had discussed transparent, opaque, and translucent objects. So before go through this, for your recapitulation, I will repeat it again. What's light? What is light? Tell me what is light. So we can say the energy from the sun or any source or from a lamp that allows you to see things. That is called light. That is called light. Now shadows. What are shadows? Shadows. A shadow we can see a dark shape on the surface that is caused by something being between the light and that surface. Okay. Now then what is reflection? What is reflection? I have already told you. Reflection. What is reflection? So dear students, we can say that reflection we can say that an image that you see in a mirror, the image which we see in a mirror, in water, or in any shining object, that is called any shining object or surface, that is called reflection. That is called reflection. Or in other words, we can say the sending back of light, heat, or sound is called reflection. Is called reflection. So then after that we have discussed transparent, opaque, and translucent. So transparent are those in which the light can pass through. Opaque as those in which the light we do not allow light to pass through them. And translucent are those in which the light can pass but not very clearly. But not very clearly. Now, dear students, today's our topic is what exactly are shadows. Actually shadows जो है ये क्या होते हैं? What exactly are shadows? What are exactly these shadows? So for that purpose we have to perform this activity 2. You can also open your textbook at page number 110. Okay. Now dear students, activity 2. Now one by one hold each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to the shadow. आप में से कोई भी अपने हाथ में ले लो कोई opaque object, whether a piece of wood, whether we will take the paper, whether we will take a book or notebook or etc. But it should be opaque. It should be opaque. So you will see. What do you see? You will see the dark patch formed by each of the ground is because of shadow. It is because of shadow. So sometimes you can identify the object by looking at its shadow. हम कभी किसी चीज़ का शेडो देखते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, मतलब ये शेडो जो है ये किसका है, किस बर्ड का है या किस एनिमल का है, whatsoever would be there. Okay. Now, dear students, separate a sheet of paper on the ground, hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is forward on the sheet of paper on the ground. हम एक पेपर ग्राउंड पे लग देंगे और एक ओपेक ऑब्जेक्ट हम अपने हाथ में लेंगे, अपने होल्ड में करेंगे अपने हाथ में ओपेक ऑब्जेक्ट, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट कोई शीट ऑफ वुड होगा या पीस ऑफ वुड होगा या शीट ऑफ आयरन होगा या और भी कोई होगा, बुक होगी, नोटबुक होगी, तो उसका जो शेडो है वो डायरेक्टली फॉल डायरेक्टली ऑन द शीट ऑफ पेपर विच वी हैव केप्ट ऑन द ग्राउंड. ओके. नाउ आस्क one of your friend to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outlines of the shadows of other objects in a similar way. ओके. फिर हम किसी अपने दोस्त को कहेंगे कि जहाँ पे शेडो पड़े हैं वहाँ पे आप इसका आउटलाइन जो है इसकी ये ड्रा ऑफ लाइन्स कर दीजिए. नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शेडो. फिर हम दूसरे को बोलेंगे बोलो ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द शेडो मेड अप ऑफ, व्हाट इज द शेडो, एक्चुअली ये किसका शेडो है, हु इज द शेडो बिलोंग्स टू, how many objects are they able to identify correctly. Okay. Now do you observe your shadows in a dark room? अब हम ये देखेंगे क्या do you observe your shadows in a dark room or at night when there is no light? जब लाइट नहीं होते हैं क्या हम उस वक्त शेडोज देखते हैं, या कोई डार्क रूम होता है वहाँ पे हमें शेडोज नजर नहीं आते हैं. Do you observe a shadow when there is just a source of light
एंड नथिंग एल्स, या सिर्फ लाइट होगी, कमरे में लाइट होगी, फिर वहाँ कोई और चीज़ नहीं होगा, तो वहाँ हम किसी का शेडो देखेंगे बिटवीन द सरफेस एंड द लाइट, देयर वुड बी नो, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे आप कोई शेडो देखोगे नहीं। अगर हम कमरे में सपोज वहाँ टोटली डार्क है तो वहाँ पे तो टोटली शेडो नहीं होगा। अगर हम अब कमरे को लाइट वहाँ पे लाइट जो है वो ऑन कर देंगे, फिर वहाँ पे हम देंगे किसी चीज़ का शेडो, अगर वहाँ पे कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द लाइट एंड द सरफेस, वहाँ कोई चीज़ नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे हम कोई शेडो देखेंगे नहीं। ओके, now do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source, that means we need a source of light and an object to see a shadow. Is there anything else required? So अब shadow के लिए, for shadow it is necessary we need a light, we need a source of light and an opaque object, if there would be an opaque object and light, then it is a possibility of shadow would be on the surface, whether the surface would be walls या कोई भी surface on the ground होगी, फिर वहाँ possibility of shadows होगी। Okay, now activity number third, this is an activity that we will have to do in the dark. In the evening, go out in an open ground with a few friends. हम बाहर जाएंगे रात के वक्त जब लाइट नहीं होती है, along with friends. हम अपने साथ लेंगे take a torch and a large sheet of cardboard with हम बाहर जाएंगे रात को, फिर अपने हाथ में टॉर्च लेंगे और एक कार्डबोर्ड लेंगे। hold the torch close to the ground and shine it upward so that its light falls on your friend's face. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, you can also see this, you can also look towards your you can also यहाँ पे आप you can also see this on page number 111 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हम टॉर्च को ऑन कर देंगे and the light will fall on the face of your friend, so you now have a source of light that is falling on an opaque object, because we are opaque objects. If there were no trees, अगर वहाँ पे trees नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं होगी और any other कोई भी ऑब्जेक्ट behind नहीं होगा हमारे पीछे, would you see the shadow of your friend head? No, it is not possible to see the shadow. अगर जो हमारा फ्रेंड है उसके पीछे न ट्री होगा, न कोई बिल्डिंग होगी, न कोई वॉल होगा, न कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, so it is not possible for us to see the shadow of our friend. This does not mean that there is no shadow. इसका मतलब नहीं वहाँ shadow नहीं है। After all, the light from the torch is not able to pass through body of our friend. क्योंकि वहाँ पे शेडो है, लेकिन कहाँ पे है? क्योंकि वहाँ पे अभी नो वहाँ पे कोई बिल्डिंग है, नो वहाँ पे कोई ट्री है, नो वहाँ पे कोई वॉल है आपके फ्रेंड के पीछे। नाउ ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. यहाँ देख सकते हैं आप, तो दूसरे को हम कहेंगे कि आप एक कार्डबोर्ड अपने हाथ में ले लो और इसके पीछे आप बैठ जाओ। Is the shadow now seen on the cardboard sheet? Yes, वहाँ पे हमें shadow आएगा, So इससे हमें क्या क्लियर होता है? That the shadow can be seen only on a screen. So screen का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वहाँ पे screen लेंगे, कोई कार्डबोर्ड लेंगे या कोई और शीशा या गिलास लेंगे ना। Screen means the ground. ये ग्राउंड जो ये भी it acts as a screen. Walls of room, it acts as a screen. The trees, buildings, they other such surface acts as screen for the shadow you observe in everyday life. आप जो लाइफ में देखते हो ये shadows, इसमें जो trees है या walls of room है या building है या और भी कोई चीज़ है, they act as a screen for the shadow we observe in everyday life. सो फॉर शेडो के लिए आपने देखा सोर्स ऑफ लाइट भी होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और स्क्रीन भी होनी चाहिए। अगर लाइट भी होगी और ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो पीछे से अगर स्क्रीन नहीं होगी तो हमें